Acupuncture points for dust allergy. Do follow us on all social media handles and connect with us. We have subtitles in many different languages like Hindi, English, Chinese, Urdu, Portuguese, and many more. Do check it out. डस्ट एलर्जी. डस्ट माइट एलर्जी एक एलर्जिक रिएक्शन है जो टाइनी बग से होते हैं जो कॉमनली हमारे हाउस होल्ड के डस्ट में दिखाई देती है. साइंस ऑफ डस्ट माइट एलर्जी इंक्लूड दोज कॉमन टू है फीवर जैसे कि स्नीजिंग और रनी नोज. लोग जिन्हें डस्ट माइट एलर्जी है दे ऑल्सो एक्सपीरियंस साइंस ऑफ अस्थमा जैसे कि वीजिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. डस्ट माइट एलर्जी के सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल पैसेजेस इंक्लूड स्नीजिंग, रनी नोज, ईची रेड और वाटरी आईज, नेजल कंजेशन, ईची नोज, रूफ ऑफ माउथ और थ्रोट, कफ. Li20 एक्यूपॉइंट. ये पॉइंट का लोकेशन ब्रॉड पार्ट ऑफ द नोज के एडजेसेंट या साइड में लोकेटेड है. ST2 एक्यूपॉइंट. प्यूपिल की लाइन में और 1 फिंगर बिलो फ्रॉम द बोनी मार्जिन पर यह पॉइंट मिलेगा. UB2 का लोकेशन आईब्राव के मीडियल या इनर एंड पर लोकेटेड है. SP5 एक्यूपॉइंट. इनर एंकल बोन से 1 थंब दैट इज 1 कुन फॉरवर्ड इन द डिप्रेशन ये पॉइंट मिलेगा. पॉइंट LU5. एल्बो क्रीज के आउटर एंड पर यह पॉइंट सिचुएटेड है. एल्बो क्रीज को क्यूबाइटल फोसा भी कहा जाता है. पॉइंट GB20. ईयर के बैक से 4 फिंगर्स और 1 थंब के डिस्टेंस पर इन द ग्रूव बिलो द बॉर्डर ऑफ द स्कल बोन पर यह पॉइंट मिलेगा. आप रेफरेंस के लिए पिक्चर को देखें. Last point of this video ST36. नी को राइट एंगल पर बेंड करने पर 4 फिंगर्स दैट इज 3 कुन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द नी कैप और 1 फिंगर विद आउटसाइड फ्रॉम द फ्रंट बॉर्डर ऑफ द लेग बोन टिबिया ये पॉइंट लोकेटेड है. कलर थेरेपी और क्रोमोथेरेपी. आप कलर थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए इंडिगो कलर यूज करें एंड द लोकेशन ऑफ इंडिगो कलर इज ऑन द फोरहेड एरिया.
आप क्रोमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए हमारी वीडियो हाउ टू डू क्रोमोथेरेपी और कलर थेरेपी एट होम देखें, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो की एंड में प्रोवाइड की है। डू चेक इट आउट। रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ हैंड। ये पॉइंट्स पाम्स पर सिचुएटेड होते हैं। आप ये पॉइंट्स को दिन में 1 से 2 बार प्रेस करें फॉर 5 to 10 मिनट्स। You can also use a roller to massage all these points together. रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ फुट। ये पॉइंट सोल्स पर सिचुएटेड होते हैं। आप ये पॉइंट्स को प्रेस या मसाज करें with the help of roller, and before massaging apply few drops of essential oil. Additional things to be taken care of. Extra things which you should add in your lifestyle which will help you with dust allergy. Use allergen-proof bed covers on the mattress and pillows. Wash all bedding in hot water at least once a week. This includes sheets, pillowcase, blankets and bed covers. Use an air conditioner, air purifier. Dust करें frequently with either a damp or oiled towel or mop. This helps minimize the amount of dust and prevents it from accumulating. Vacuum regularly using a vacuum cleaner. आपको कर्टन्स और upholstered furniture oftenly clean करना होगा. And also try to replace carpet with wood or tile. मुद्रा। ये मुद्रा का नाम है भरा मारा मुद्रा। ये मुद्रा को आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर परफॉर्म करें फॉर 15 to 20 मिनट्स, या आप 10 मिनट्स के 2 सेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। नोट, आप ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दिन में 2 से 3 बार प्रेस करें फॉर 60 to 80 times in 1 to 2 minutes. You can use jimmy, blunt end of the pencil or tips of fingers or thumb to apply some pressure. Do check the link in the description box to buy some instrument for yourself. हम ये वीडियोस हमारे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, सो आप हमें सजेस्ट करें व्हाट ऑल ट्रीटमेंट वीडियोस यू ऑल वांट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक, शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल so that you get notified every time. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.